got indication to close this. How much time? 35. So I'm quickly rushing out. Understood climate change means we will see the many more harvest kind of the disasters to many other places, Hurricane Michael and other. And from here, the ocean and this drought is coming up, more moisture evaporation is drought coming, forest fire is coming, disasters. So more frequency is increasing to the recent time. So more forest fire taking place. And the three most expensive wildfire in the world history has happened in the last 2 years, 18, 17 and 18 is this. And the most, in Canada, the forest fire, if you see the fire, smoke is coming in the entire Russia, the dot is showing, so many areas are covered with the forest fire. And the same, the India and somewhere, the heat may soon be literally unbearable in the case. And the world could see up to 1 billion climate migrants because of this. So another disaster is coming. For every 1 degree warming, the extreme lightning takes place. And with this lightning, lots of casualties in the recent period has been noticed in Indian cases also. So this is another kind of the disasters. And extreme temperature cases, I'll skip quickly from here, the catastrophes. See in the glaciers what is happening. The glaciers will take place and those glaciers is now having the water over there. So glacier is shrinking and more water. This is the decline of the volume of the glaciers. And the rate of the ice melt in the Himalayas has doubled since the year 2000 in the last 20 years. So this more melting and this research is being done by going to the glaciers and doing in-depth research, and those data says how much is the loss over there. So the energy balance is another example of it. If you're working for the glaciers, you have to work in these conditions. And this is another example of the flood. So from here, I'm quickly moving some remediations. This says the climate change will likely to lead to the flood and water shortage and pandemic disease. The disease is also coming. We are still in the pandemic of the COVID, and the food security is going to be endangered because of the rise in the temperature. The crop productivity goes on loss. So corn is going, if it's 1 degree of rise of the temperature, the corn is going to loss by 7.5%, wheat maybe 6% loss, soya 3.1% loss, rice 3.2% loss in the productivities with 1 degree rise of temperature. Then the quality of the grains and the quality of the food also deteriorates, and that may causes some disease to the human and animal if you are consuming. The climate change is again a medical emergency. So here we require to have the tropical disease that is coming too much to the all entire of that names to be the Nile virus, Rift Valley fever, chikungunya, and you have the dengue, Zika virus, and recently you are having the COVID-19. And these are the different migrants. The biodiversity is at the threat because of the disasters, and the cost of the carbon is increasing to the many folds. So I'll skip from here. So we must change as the solution. So yes, and what are the solution in hand? We can change. The line is that the Pope Francis said, if we destroy the creation will destroy us. So we should not forget it. And so we have solution in hand. And solution is that the prevention is better than the cure. And for this prevention, I will show some of the examples. These are mitigation technologies by which you can have the 7 C's for the disaster management that has been discussed a little bit by Amit sir. The possible impact on the climate change that we have seen through the photographs and the scenarios. What are the solutions? The climate change. IPCC said that this heavy rainfall and all can be changed. The solution is that you have to reduce the fossil fuel consumptions and reduce the global warming with the reduction in the pollution, and think for the green energy. And this green energy projections was of 2000 to have the 30 gigawatt ton by 2010. But we have reached to 22 times more than the commitment by 2019. So we are moving in these directions. And the global wind energy capacity is of this graph of by 2019 is going to 700,000 of the megawatts. And these are the solutions. Solar energy capacity is too much and we need to enhance more of it. So 700 gigawatt tons of the megawatt capacity we have increased by 2019.
See, the cost of the solar productivity is now reduced by 2019. It is $2.25 per watt. So more installation will take place. Earlier this was costlier. So now this could be a kind of solution that everybody has to contribute. And the Chilean solar market is increasing like anything. In process, this graph shows such a huge market is there, and with this your dependency on the fossil fuel will reduce, and by that you are going to contribute towards the green energy, and that will really enhance the conditions and probably the later on to the disasters. So we have the more potential by solar energies. LED light everybody is now started using. 25% of is a target by 2025, and by that also the load on the electricity will reduce. By that the thermal power plants pollution will reduce, and many vehicles are moving to the electrical vehicles, where you have the Indian companies also moving into that. The Mahindra and Mahindra and others are there. So can we change? Yes, we can change, and we will change, and this change has been taken care by this Paris conventions. In that meeting, the global summit, everybody has committed that the US, we all will think for reducing the greenhouse emission by another 20 years, and by that, the people has to be vocal in this. So every people like this civil defense guys, volunteers, workers, everybody has to be vocal for this, and more awareness is a requirement. So join those who are using these voices, vote them, encourage them to fight against the climate crisis. Then only we will have the solution. So use your own voice, use your vote, use your choices, and speak the truth of the power of the green energy concept by which you can reduce this. So your world depends on it. So you are required to save your world. And these are the other solutions that you can do by more plantation, and you can improve the climatic conditions and the environment. You can make it sustainable. So hurriedly, I have to conclude this. Thank you so much for your patience hearing. Thank you to everyone, and thanks for the opportunity given by this civil defense people, especially Sri Amar Singh ji, Amit ji, and the Pacific University who invited me to talk on these topics. Thanks to everyone. And wherever it is required in the question and answer session, I shall be here, and it's over to the Sarma sir. Thank you. Done. Concluded. I concluded. Yeah. Thank you very much, sir. Thank you for your very enlightening delivery. Thank you very much, sir. Yeah. Now, I am inviting, and first of all, let me introduce you to our next keynote speaker, Shri Dilpal Singh Ji Rana Sahab. Shri Rana is a top management professional in the area of security and administration. Shri Rana is a gold medalist in LLM, along with various diplomas in different subjects. Shri Rana earlier rendered his services in the CRPF on the post of commandant. Shri Rana has been awarded with President's Police Medal for meritorious service in Police Special Duty Jammu and Kashmir. Now I invite Shri Rana sir to address this session. Over to you, Shri Rana sir. Thank you very much, Mr. Amar Singh and other dignitaries. And this is DS Rana. Although I have served in CRPF, but in the initial timings I had been in the National Disaster Movement, which was after all raised as a NDRF, and previously it was a part of the CRPF. So I had faced the earthquake as well as floods as well as the pandemic practically, and I will let you know some of the incidents faced by me as well as certain remedies. Are you hearing me? Yes, sir, you are very much audible, sir. Okay. Now I will give you my presentation.
My topic is related to the introduction to the nuclear, biological, and chemical disasters and their management. Firstly, I would like to, although every one of you know that there are two types of disasters, they are natural and the man-made disasters. And natural disasters, earthquakes, cyclones, storms, floods, famines, droughts, and epidemics. I will like to show you some photographs of Anjar in Gujarat, which was happened a few years back. In which many people were killed and the property of courts and courts in that earthquake. These are the photographs, real photographs on the ground. Can you see the presentation? Can you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, your presentation is visible. Yes, sir. It is visible. Yes, sir. Yes, it is visible. Sir, it is visible. These were the situations where the practical. काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है। अमर सिंह जी म्यूट करा दीजिए, जरा डिस्टर्बेंस आ रहा है। Now I will start with the man-made disasters. Man-made disasters, mostly they are air, rail, sea disasters, floods, explosives, building collapse, industrial accidents, and a weapon of mass destruction incidents, nuclear, radiological, biological, and chemical disasters. इनमें से दो भी एक साथ कभी-कभी डिजास्टर्स हो जाते हैं, जैसे वगैरह है डिजास्टर्स में इंसिडेंट जिसमें ये एक मीन्स के बनाए गए हैं, बट ऐसे डिजास्टर्स में who are the first responders and their responsibility that should be known. The trained member, firstly we should have some trained members. Even in a small town or small villages, everywhere, we should give some training to the local people so that they are the first responders to the disasters. The trained person of a team for the response to any type of disaster hazards are known as the first responders. The first responders may be trained person for the from response. It may be from police, paramilitary, firefighters, NGO, and even from the general public. Basically, the job of a responder is a teamwork. It should be a good team work for better results. This is I am showing about how the rail disasters occurs. Usually, that may be due to some sabotage, or it may be some act of some terrorist, or it may be some natural also. So, what should be the role of first responder? Firstly, they should save the life. Secondly, they prevent the escalation of the disaster. For example, if the fire is going on in a forest in the area, then how it is to be stopped and what kind of chemical, water or anything is to be used. How to minimize the loss of property and how to save the environment. As a thumb rule, the first responder can perform government roles only after he ensures his own safety and safety of others. This is to be kept in mind. Secondly, what they should do, the first responders, firstly, they should cordon off the area. And I'll tell you, I had an opportunity to serve in the Intelligence Bureau for 10-11 years. And what happens when there is a disaster of a very large scale, like that happened in Nepal recently, the foreign agencies come there for a help. But in the guise of the help, the people, some intelligence people enter into that country for various kinds of their purpose better known to them. So that is to be kept in mind. And secondly, because many children become orphanage
and especially boys, small boys and girls, they are being lifted by the lifters, and usually the such pimps and other people, they come from other states to that disaster area, and they pick up those children and they utilize them for their purpose. So that is what we kept in mind. And but we should set up a command post where all the matters related to missing people or the loss should be reported. Checkpoints for monitoring the contamination means no outsider who is not authorized to enter that area should be allowed to enter. And decontamination should be there. And the team authorized only should be allowed to enter the disaster area. Clearing the controlled area, recall the victims, containing the source, and collection of samples and self-contamination. So these points are kept in mind. Now I will show you some of the photographs which we the dresses and the various we used for the chemical disasters. That which I am showing. This is a dress people wear now. The people for this COVID-19 they are using. We had been using all these kits, chemical and biological warfare, chemical disasters, and many kits are available with the CRPF as well as NDRF people. These are the drills, and we give enough practice for the people and our department personnel to how they should act when there is any act of disaster. Now, I will basically give more emphasis on the chemical, biological, radiological, and nuclear substances and their impact. Because now you can see the very small, now the latest trend is going on, and as per our latest reports, the terrorists have acquired the dirty bombs, means the bombs are prepared from the nuclear waste. And their size is very small. They can be just like that of a hand grenade, and it is very dangerous. And one such dirty bomb can destroy a huge multi-story building at a time. So it is presumed that and it is also what should say, intelligence says, terrorists are in the process to procure the dirty bombs, and now the time has come that we should be prepared for that. So we should take the security measures, all the security measures to prevent all those actions of the terrorists. So now I will give in detail about the rail, airplane accidents, fires, explosions, building collapse, industrial and biological weapon of mass destruction. And now I will come with the weapon of mass destruction. It's chemical weapons, biological weapons, radiological dispersal devices, and improvised nuclear devices. Firstly, I will give the brief about these such attacks. First, in 1972, in Chicago, the water supply was contaminated with the 30 to 40 kilograms of typhoid virus. Now, they are very easy to mix such biological agents in the water and to kill or to spread the disease in the desired area. And in 1978, the Bulgarian authorities fired a resin-tipped bullet from an umbrella into a dissident residing in another country, causing his death the next day. I will give you one example of my services when I was in CBI. So one IAS lady,
she was in affair with her colleague, and both were having affairs, and though both wanted to get married, that the lady was MSc in chemistry and having sufficient knowledge about the chemicals. So once the boyfriend went to her house, found that after that completion of their training, and they proposed for marriage, and that boy then went to her residence, but he saw that that lady is totally bald and was looking very freak. So he immediately refused to marry her. So then one day she asked him, "You come to my residence, we solve our problems." And what happened during their talk, she took one घोड़े का नाल जिसको बोलते हैं वो लिया, and she attacked with that घोड़े का नाल with on his neck, and there was a slight bruise, only slight bruise, and that boy left after 7 days. That boy died of tetanus. So the investigation started. Then everyone said that he might be having tetanus due to some injury. There was no injury, and one investigating officer from CBI, then he checked. Then he found that there is a small injury on the neck, and it was a very just like a bruise. Then he said that this should be checked. When it was checked, they found the titanium chloride that was used by that and it was hit on his neck, and that boy died. So these chemicals can be very, very dangerous, and death may cause at the later stage and without any recognition. Now, in 1984, a chemical West German Red Army faction found a botulinum toxin at a secret laboratory in Paris and France. A chemical in the United States, one group, the Covenant, found the possession of a 129 liters of cyanide. Cyanide is a very dangerous poison, and it was used. It was a drum was kept on Nile River by the terrorists that we will kill the public if our demands are not met. In 1986, the one cult poisoned salad bars in United States restaurants with the salmonella, causing 750 people to become ill. In 1992, in a chemical, neo-Nazis in Germany targeted with cyanide. In 1993, it was a chemical attack. The bomb used against the World Trade Center included cyanide, burned up the explosion. In 1994, chemical stain in Japan, killing 8 and hospitalized 20. It was used by terrorist organization over there. These are some buildings which were later on destroyed by the this kind of attacks. In 1995, now it's a biological. In 1995, a sarin gas it is a sarin gas in Tokyo subway. It was used by the terrorist group, and in which the 12 people died and more than 5,000 were affected. Most of them were psychologically affected. In 1995, again, FBI prevented sarin attack. Sarin is a gas attack at Disneyland. In 1995, the chemical attack in Japan with cyanide, phosgene gas, and paper spray. In 1995, Chechen placed a 14 kilo package of radioactive cesium-137 and explosives in the Moscow Park. 1997, 2 attacks in Japan against the shopping center with the chlorine bombs. Anthrax attack in USA. I tell you, once the anthrax letter was also received in the PMO in India, and when it was checked during routine checking of the dark and everything, it was found in the envelope, and it was isolated that time. And there are checking at the BBIB. There are so many checks, and after that it goes to the BBIB. Now, the weapon of
devices that is intended or have the capability to cause death or serious bodily injury to the significant number of the people through the release, dissemination, and impact of toxic and poisonous chemicals, disease organism, radiation, and materials. They are very dangerous to all the people, and mostly such disasters are caused, and it can happen at any place, and especially at the crowded places in the country. So we should remain very alert for that, and we should know what we should do when such disasters happen. Now I will come with some weapon of mass destruction, especially 10 to 14 countries have developed biological weapons, and they are like in China has, that is on top. They have got the various kinds of viruses and bacteria. Recent is the example of corona, and it is corona and one more dangerous, 1,000 times more dangerous virus is also developed by China. It is learned, but it is not still official. That virus is likely to be released by China in case it is attacked by some countries. And under 22 to 24 countries have developed the chemical weapons. Chemical are very dangerous. I will show you the photographs later on. These programs are offensive programs. In case any country attacks them, then only they are to be used. But it is not officially declared by any country that they are having a chemical weapons. The unknown quantities of weapons have gone up on the black market during the breakup of the Soviet Union and the Warsaw Pact. I tell you, Russia was having so many atomic weapons and chemical and biological weapons, but after its disintegration, the many weapons were distributed among the various countries, breakaway factions, but some of them were stolen by the having some their personal interests stolen by them, and still they are not at risk. And it is learned that they might have been transferred to some terrorist organizations. This is the structure of chemical weapons. I will show you, although the chemistry is not required to be explained, but these are the hydrogen bomb developed by the US and more countries. Only 3 countries are having hydrogen bomb and having nuclear bombs. And the capacity of the nuclear bombs is calculated in the form of TNT, non tolerant explosive के ऊपर उनको और से इम्पैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना एनर्जी रिलीज करते हैं. ये केमिकल वेपन्स का स्ट्रक्चर है जो हम दिखा रहे हैं आपको. और ये न्यूक्लियर वेपन्स, to be very frank, they are kept very safe and secret, and it is very difficult for a normal person or a terrorist group to procure. But they are radiological based, and other types of radiological material are much easier to obtain. For example, in India, the nuclear material is used for production of the electricity. Now, what happens? The waste is kept in a deep trench down in the earth, about 200 meter to 300 meter down in the earth, and it is released over there. In the sea also, the waste is released deep in the sea. So it is possible for the interested persons to collect the waste from those areas and make the dirty bombs or some the other weapons. So while the chemical and biological weapon material are the easiest to obtain and procure. Well, how
The process of making any person, object, or area safe by absorbing, destroying, neutralizing, being harmless, or removing chemical, biological, radiological material. This is contamination, and now comes the chemical warfare. Physiological classification is there, classified on the basis of physiological effect produced by them. Irritants, they are the chlorine and phosgene gas, and you might have seen them mostly in tear gas and other. So they are being used by the police personnel to disperse the mobs, and they are irritants. And blood poisons, hydrogen cyanide, and cyanogen chlorides. These are the blood poisons. They mix up with the air, and you inhale, and you ultimately the person dies. And desiccants, mustard gas. Mustard gas is very easy to procure and make it. Nerve agents like G agents and B agents. These are the very dangerous chemical agents. Physiologically, they are the sarin gas, Suman gas, Tabun gas, and VX gas. These are the nerve agents which choke your nerves and ultimately individual dies. These are the blistering agents which cause blisters on your skin, and ultimately so many rashes on the body. Ultimately, the person dies. They are the sulfur mustards, nitrogen mustard, and herbicides. I will show blistering agents. They produce the skin injuries. What are their effects? Affects the respiratory tract and lungs and produce pulmonary edema. And it is available in liquid state. This is the picture of a person where sarin gas was released, and the many people in Japan they suffer this kind of skin problems. Now you see how dangerous it is, because it will destroy your complete skin. It will destroy your eyes. It will destroy your all soft parts of the body. What are the blood agents? They are hydrogen cyanide. That's it. The cyanide is the most dangerous. Cyanogen chloride. They are the most dangerous, and they just coagulate your blood, and the thickness of the blood increases, and ultimately heart is choked and a person dies. Now the various are the blood agents. These are the phosgene, tear smoke munitions. Also, they are the choking agents. They choke your breathing problems. They create you the breathing problems. Tear smoke munitions, they are CN, CS, and CR. They are being used by the police personnel for tear smoke to disperse the crowds. And recently, it is being used in the Kisan education. So they are not the harmful. They bring tears and some irritations while you inhale the air. Psychochemicals, they are the slow poisons that are given by the known persons to the known person. And mostly, sometimes what happens, for example, some people are very flourishing, and some people are hanging jealous to them. What they do, they give some these sedatives and the such medicines which are mentioned over here, LSD 25 and mescaline, and so these medicines break down in the nervous system. Ultimately, nervous system. The person loses its own vision, own working methods, and his mind is controlled by others. So this is another method. This is being used by some intelligence agencies also to extract the information from the other people. They are available in the solid state.
sometimes they are used to destroy crops also, or natural vegetation. There are some medicines, there are some chemicals which are sprayed over the crop and by the enemy country, and the crop destroys. The crop burns and it is destroyed. So these were the certain points which I wanted to discuss about this. And if you have any question related to the presentation, because I was given a limited time to present, otherwise my presentation was with all the in detail, and it was for 2 hours, but I had to stop. Any question you can ask. Sir, we will have question answer session just at the end of this session, sir. Okay, because I have to go to some places. That's why I was asking. If you have any question, you can ask me. If you need, I can give you the presentation of 2 hours in which the right from the details to equipments, but how the people can help, what kind of instruments everyone should have. So we can. But Cynthia, further you need any clarification? Dear friends, all you attendees are requested to raise any query if at all you have to Mr. Rana Sahab, because he has to leave. If you have any queries, you can ask questions that will be answered by Shri Rana sir. Hello. Yes, Mr. Vivek. सर, जैसे केमिकल कोई वो होता है, घटना घटती है, तो उसके लिए पहले क्या प्रिवेंशन करना चाहिए, मतलब क्या तैयारी रहनी चाहिए? देखिए, जो केमिकल जो अटैक होते हैं, यूजुअली दे आर डन बाय द टेररिस्ट और एनी फॉरेन कंट्री. यूजुअली यहाँ पर जो लोकल में जो अटैक है, यूजुअली दे आर द एसिड अटैक्स ऑन गर्ल्स स्पेशली ऑन देयर फेसेस, एंड इट इज सजेस्टेड दैट जो कच्चा दूध होता है वो इमीडिएटली उनके ऊपर डाला जाए, तो दैट विल न्यूट्रलाइज द एसिड अटैक्स. बाकी जो केमिकल्स हैं उनको यू विल हैव टू गो टू हॉस्पिटल्स, बिकॉज किसी भी पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है कि ये केमिकल कौन सा है एंड व्हाट काइंड ऑफ रिएजेंट्स वी शुड यूज टू स्टॉप इट्स एक्शन. जी सर. एवरी पर्सन कैन नॉट हैव द केमिकल्स. Okay, और यदि कोई फॉरेन कंट्री करता है तो दैट विल बी ऑन द मास स्केल, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ए जनरल पब्लिक और इवन इन द डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट्स टू कंट्रोल इट. फॉर एग्जांपल, अभी जैसे कार्बाइड का, यूनियन कार्बाइड का हुआ था भोपाल के अंदर, एंड इट लेड टू द 3000 डेथ्स एंड मोर देन 25,000 पीपल डिसेबल्ड. सो इसमें कोई भी मैनेजमेंट ग्रुप कुछ भी नहीं कर पाया था. Ultimately, the hospitals were there. Cyanide gas थी वो भी, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी वो भी. तो वो such disasters can happen anywhere.
एंड इमीडिएटली कोई भी आदमी उसके लिए कोई रिएक्शन कर नहीं सकता। ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वारफेयर हुए। अब देखिए, अब बायोलॉजिकल वारफेयर का ही एक ये हिस्सा है जो कोरोना चाइना ने रिलीज किया है। तो उसके बाद में पूरे वर्ल्ड के अंदर वो फैल गया, कुछ नहीं कर पा रहे। अब जाके 1 साल लग गया उसकी वैक्सीन डेवलप करने में एंड टू टेक एक्शन अगेंस्ट। Sir, I have a question. Sir, I understand what you're trying to say, sir. My simple question is, if there is any kind of chemical attack or a chemical disaster, first thing, what is the basic thing which civil defense has to follow? If you can please clarify, sir. Thank you. सिविल डिफेंस में सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि यदि केमिकल अटैक किसी भी जगह पे होता है तो इट इज slowly spreads, it is not having an immediate action, just like it will not spread in the air immediately. For that purpose, firstly you have to make the public aware that they should close their doors and everything, and they should remain indoors. Number 2, if they are outside their residence, so they should lie down in the sun. कोई खड्डे वगैरह हो या कैसे हो, उनमें लाई डाउन करना है, तो कि उससे क्या है कि केमिकल्स हैं थोड़े से हैवी होते हैं, हवा से हल्के होते हैं, तो ये ऊपर से निकल जाते हैं। ये एक इनको हम करंटली वो दे सकते हैं। और साथ में ही केमिकल्स, फॉर एग्जांपल एसिड्स अटैक्स है या दूसरी सिलिन गैस वगैरह है, तो उसमें क्या है, मुंह पे कपड़ा बांध लेना है ताकि ये एंट्री ना करे, गीला कपड़ा करके मुंह के ऊपर बांध लेना है। तो ऐसी सजेशन वी कैन गिव। Thank you very much, sir, for the 3 valid points. Thank you. सर मनोहर बोल रहा हूँ बैंगलोर से। हेलो, हाँ जी, मनोहर बोल रहा हूँ बैंगलोर से। Hello, can you hear me? Dr. Shravan from Bihar, Patna. Hello. हाँ जी, please carry on. Just I want to know what is the first aid if the casualty is affected by acid attack. First, acid attack में हमने प्रैक्टिकली करके ये देखा है कि यदि आप किसी के ऊपर भी यदि ये एसिड अटैक होता है तो सबसे पहले यदि आपको क्लियर बाई या कहीं भी कच्चा दूध किसी भी गाय का, भैंस का मिले तो उससे उसको इमीडिएटली वॉश कर दो, वो काफी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, उसको एक्सेसिव यदि वो नहीं तो एक्सेसिव है क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज करना है। सबसे पहले अपने वाटर से या बेस से नहीं, आप पानी से करते हैं तो पानी जो है वो इमीडिएटली अवेलेबल होता है सब जगह। यदि मान लो कच्चा दूध नहीं मिल रहा है तो पानी से आप उसको इमीडिएटली वॉश करिए, एक्सेसिव वाटर से, ताकि वो डाइल्यूट होकर निकल जाए। अच्छा, क्या चूने के घोल से वो कटेगा नहीं? sir, kindly have your limited questions because we don't have any more time. We are running out of time. So please. इस्तेमाल नहीं करते हैं यूजुअली। Thank you, Rana sir, Dilip Singh Rana sir, thank you very much for coordinating to us and delivering a very nice presentation to our the volunteers and communities and all civil defense volunteers from throughout countries on the site they are listing. And I am highly thankful to you. You have delivered a very nice presentation. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Rana sir. Thank you, Rana sir, for your very enlightening speech. Thank you very much. Now, friends, I am introducing you to our next and final keynote speaker, Shri Gurudev Singh Saini Sahab. Shri Saini is presently working as Director, National Civil Defence College, Nagpur. Shri Saini holds a master's degree in business management. Shri Saini was commissioned in Indian Army in 1982, and after his stint in Indian Army, Shri Saini was selected as a faculty of National Defence College, Nagpur in 1989. Shri Saini now teaches subjects of civil defence and disaster response management,
among other related subjects. Without further ado, I now invite Shri Gurudev Singh Saini ji to address and enlighten us on this topic. Over to you, Sir Saini sir. Welcome, sir. Welcome. Sir, your voice is not reaching us. Hello, Saini sir. There is some issue as far as your voice is concerned. Kindly try to fix your mic. Hello. Sir, can you hear me? I am Dr. Joshi. Your voice is not reaching, sir. Sir, you are not audible, sir. Sir, still you are not audible, sir. Kindly try to fix your mic. सर प्लीज अनम्यूट करिए ताकि हम सब सुन सकें. सर वॉइस नहीं आ रही कहीं से. May I again request Shri Gurudev Singh Saini, Mr. Shanu, please, sir, turn off your mic. You may kindly turn off your mic, Mr. Shanu. Okay, sir. Okay. Yes, we are trying to connect to him. May I again request Shri Gurudev Singh Saini sir to
start his address. Sani sir, am I audible to you? Sir, actually your mic is not in the order as we are unable to hear your voice. So kindly try to fix your mic or unmute your mic. No. Please inform Amit Pant to mute his audio. Mr. Amit Pant sir, kindly mute your mic. Yes, sir. Thank you. Is there Sani sir? Sani sir, are you there? Sani sir, can you hear me? Sir, now you are there, but your voice, there is some issue with your voice, with your mic. Mr. Sanjeev Kumar, please, yes, keep your mic off. Dr. Joshi sir, please ring him and inform it. Perhaps he's not hearing us. Sani sir, can you hear me? सर मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? Yes sir, yes, now you are audible sir. Now you can continue. Okay sir. Okay, you can continue sir now. Over to you. Hello. Yes sir. Now I'm audible? Yes sir, you are audible now. Okay, fantastic. Thank you. Sorry, there was some issue and settings. I think most welcome sir. Okay, at the outset, I would like to thank Dr. Joshi for introducing me to all the participants. And I'm also thankful to Dr. Dave, Dr. Subhash Sharma from Pacific University, who have been very kind to include me in their own webinar. And I also thank Mr. Rathore, or rather I'll call him Lion Rathore, who has been rather pestering me to come and join this webinar and enlighten people on civil defense. Friends, in fact, I am not making any presentation. I'm just going to be talking from my heart. And I think all of you will understand because there's enough which has been told and said about the matter about disasters. But we have not been able to dwell much more on civil defense. So I would rather more dwell on how civil defense has got a much bigger role as far as disaster management is concerned. 200 बहुत साल पहले इनफैक्ट जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी तो सिविल डिफेंस का कॉन्सेप्ट बनाया गया था एंड सिविल डिफेंस कॉन्सेप्ट वाज प्राइमरीली ब्रॉट इन at a stage when the emergencies on ground were increasing at a much faster pace as compared to the availability of the emergency services.
इमरजेंसी सर्विसेज कम थी और इंसिडेंट्स काफी ज्यादा हो रहे थे, नुकसान काफी ज्यादा हो रहा था, और इस कारण से इनफैक्ट देयर वाज अ नीड फॉर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, देयर वाज अ नीड फॉर कम्युनिटी सपोर्ट, देयर वाज अ नीड फॉर पीपल टू कम एंड इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ people in fact who could afford or who could provide emergency services. ऐसी बहुत सारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं, लोकल लेवल पर भी हैं, और आप सबको ये बता दूं कि इस समय 1 लाख से ज्यादा हमारे वॉलंटियर ग्राउंड पर कोरोना के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें केवल अवेयरनेस नहीं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, बल्कि कई जगह सैंपल कलेक्शन में भी और टेस्टिंग में भी एडमिनिस्ट्रेशन की मदद कर रहे हैं. Coming back to the entire understanding of the word civil defense, हमने कहा कि सिविल डिफेंस फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, कम्युनिटी से है. बहुत अच्छी बात है कि हम सब जाने कि सिविल डिफेंस क्या चीज है, लेकिन एक प्रमुख चीज हम जो भूल जाते हैं कि सिविल डिफेंस जरूरी क्यों है. अब मैं एक सवाल आप ही लोगों से पूछूंगा कि जितने भी हमारे जेंट्स हैं इस वेबिनार में, that they I think may be aware what to do in case there is a person who has just been given just had an heart attack. अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए तो ये तो मुझको मालूम है कि CPR देना पड़ता है, और CPR देने के लिए ये बहुत चीज जरूरी है कि हम ये जाने कि इसको दिया कैसे जाता है. लेकिन एक सच्चाई आप सभी जानते होंगे कि जेंट्स तो जानते हैं कि CPR देना कैसे है, लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ को नहीं सिखाया होगा, क्योंकि अगर उनको होगा तो उनकी वाइफ सक्षम है कि नहीं ये नहीं जानते हैं. तो ये पता कर लें, क्योंकि मिटिगेशन यहाँ से शुरू होती है दोस्त, कि क्या आपने अपनी वाइफ को भी इसके बारे में प्रशिक्षित किया कि अगर आपको हार्ट अटैक आए तो वो आपकी जान बचा सकें, क्योंकि घर में अगर ऐसा होगा तो वही आपके नजदीक होंगी. तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं, सच्चाइयां हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है. एक दूसरी बात भी कह दूं कि हम बड़े बड़े डिजास्टर्स के बारे में बात करते हैं, हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं. एक प्रेजेंटेशन अभी डॉक्टर प्रसाद साहब बोल रहे थे एनवायरनमेंट के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, और आज से 10 साल पहले ही मेरे एक सेमिनार में यहाँ के महाराष्ट्र के जो चीफ इंजीनियर थे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, he had very categorically stated that in case 1 crore consumers of electricity in Maharashtra, they only make a saving of 50 watts of energy. For the next 20 years, no power plant will be required. लेकिन आपको मालूम है कि पिछले 10 साल में और उससे भी ज्यादा आगे जाए तो इतने प्राइवेट सेक्टर के पावर प्लांट आ चुके हैं और इतनी ज्यादा हमने पोल्यूशन बढ़ा दी है कि ग्लोबल वार्मिंग का फैक्टर बहुत बड़ा है. हमने अपने लेवल पर एक्शन की बात नहीं की है, और इसलिए सिविल डिफेंस बहुत जरूरी है कि भाई आप अपने लेवल के एक्शन की बात करें प्रैक्टिकली, वो चीज जानना बहुत जरूरी है. और सिविल डिफेंस सभी प्रैक्टिकल लोगों की है, वो जो प्रैक्टिकल कर चुके हैं उनको मालूम है प्रैक्टिकली क्या किया जाता है, कहाँ पर करना है, कैसे करना है. उसके बारे में मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा. मेरा हालांकि टॉपिक ये नहीं है, मैं लेकिन उस टॉपिक पर आने से पहले कुछ चीजें आपको बता दूं कि हमारी तैयारी हमारे सर्वाइवल से शुरू होती है. वी नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट प्रिवेंशन ऑल्सो हैज ए पोटेंशियल टू फेल. ये हम सब जान लें. और प्रिवेंशन अगर फेल हो सकता है तो क्या हमारे पास प्रिपेयर्डनेस की है तैयारी? आर वी प्रिपेयर्ड? डू वी हैव इनफ नॉलेज टू टैकल एनी पर्टिकुलर सिचुएशन इफ वी आर फेस्ड विद? मैं एक साधारण सी बात पूछ लूं कि भाई अगर आपके ही घर में कोई लेडी फिनाइल और ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल करके एक साथ अगर क्लीनिंग करती है घर पर, तो कौन सा केमिकल रिलीज होगा? तो शायद मेरे ख्याल में मेनी पीपल मे नॉट नो दिस. और अगर फिनाइल और आप किसी प्रकार से ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो क्लोरीन रिलीज होगी. एंड क्लोरीन एक केमिकल वेपन है जिसका इस्तेमाल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हो चुका है. एक बहुत साधारण सा केमिकल है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये उतना ही डेंजरस है. इट कैन एस्फिक्शिएट यू, इट कैन चोक यू, एंड सब्सिक्वेंटली इट कैन बी अ स्लो डेथ फॉर यू.
और क्या घर पर अगर हम ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं जो सैनिटेशन के लिए होते हैं, these can be used primarily in a safer manner provided the lady protects herself or any person who is using it protects himself. और प्रोटेक्शन यहाँ पर बहुत साधारण है। साधारण ये है कि घर में बेकिंग सोडा तो मिलता है, और बेकिंग सोडा का घोल बना लें अगर हम, जिसमें कि 1 से 10 का अनुपात होना चाहिए, 1:10 का रेशो होना चाहिए। यू मस्ट हैव 10 parts of water and 1 part of baking soda and dip a cloth into that solution. वो अपने नाक और मुंह पर लगाएं तो you can protect somewhat in whatever manner against any particular chemical vapor which may be emanating from a particular product. अब ये साधारण सी चीज है जो सिविल डिफेंस की तैयारी के बारे में बताती है कि सिविल डिफेंस की तैयारी कैसे की जाए। अब जब तक हमारी तैयारी ना होगी, हमारी जानकारी ना होगी, तो फिर से पता लगेगा कि किस प्रकार से हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण काम सर्वाइवल के लिए है, वो है आपका आइडेंटिफिकेशन। आर यू एबल टू आइडेंटिफाई? In fact, there was a question which was asked by Shrifi. Shrifi, I think, must be part of the webinar now also. Shrifi, the first part, in fact, you must understand as far as civil defense is concerned, identification is a big challenge for many people. How to identify a chemical? And for that, in fact, even if you don't identify, there are a lot of markers which are available. कंटेनर्स के ऊपर होता है, टैंकर्स के ऊपर होता है, ऐसे बहुत सारी निशानियां होती हैं जिससे आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। And Shrifi, if you can download an application onto your mobile phone, it will give you an access to more than 9,000 dangerous chemicals listed in the UN dangerous goods list. इस एप्लीकेशन को हम कहते हैं ERG 2020 कैपिटल में ERG को अपने मोबाइल फोन पर ऐप को डाउनलोड कर लें तो आपको पूरे जितने भी डेंजरस गुड्स लिस्ट की जो यूएन ने अपने यहाँ लिस्ट की है उसमें ना केवल इसकी लिस्ट आ जाएगी बल्कि उसके साथ में आपको क्या एक्शन लेना है वो एक्शन पॉइंट्स भी आ जाएंगे। एट फर्स्ट रिस्पॉन्स लेवल क्या क्या चीजें सुरक्षित रखने के लिए करनी चाहिए, दैट एवरीथिंग विल बी ऑन टू योर मोबाइल फोन। So that's one particular strength which you will get as a civil defense responder, as a civilian also, where you have access to such information and subsequently can immediately start the work when it is needed. एक सबसे बड़ी बात और कह दूं कि दोस्त बात सर्वाइवल की है। नॉलेज होगी तो आप सर्वाइव करने की हिम्मत रखेंगे और हिम्मत अगर सर्वाइव करने की होगी तभी तो दूसरे की मदद कर पाएंगे। वो कहते हैं ना, साधारण सी बात है कि डूबने वाला तो डूब रहा था लेकिन जो बचाने जाने वाला था वो तैरना नहीं जानता था लेकिन कूद गया। अब क्या होगा? जो व्यक्ति बचाने गया था वो तैरना नहीं जानता था, बचा पाएगा? सच्चाई है नहीं। और अगर फ्लड वाटर की बात करते हैं तो वहां से अच्छे अच्छे तैराक भी बह जाते हैं। सो ऑब्वियसली द बिगर क्वेश्चन हियर इज दैट हमें बात वो करनी है जो हमारी समझ में हो, जो कि हमारे बीच में हमारी स्ट्रेंथ बन सकती है। तो यू हैव टू, सिविल डिफेंस का मकसद ही है कि हर व्यक्ति, इस समय हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने हमें कई पॉइंट दिए हैं, हमारी सरकार ने कई चीजें हमारे लिए बताई हैं और प्रयास ये है कि 1 करोड़ लोगों को हम वॉलंटियर के तौर पर अपने पास लाएं। वो केवल वॉलंटियर को काम करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि ये कम से कम 1 करोड़ तो सर्वाइव करने की काबिलियत रखेंगे। और अगर सर्वाइवल ज्यादा होगा तो रिकवरी तेज होगी, मैनेजमेंट आसान होगा, हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी जो कि ग्राउंड पर इन चीजों को कर पाएंगे। एक और सच्चाई आप लोगों से शेयर कर लूं, मैं नहीं कहता, यूएन कहता है, यूनाइटेड नेशंस के आंकड़े कहते हैं कि दैट मोर देन 90% ऑफ लाइफ सेविंग ऑपरेशंस आर कैरिड आउट बाय बायस्टैंडर्स। जो आसपास खड़े होते हैं लोग, जो उस मोहल्ले में होते हैं, शहर में होते हैं, वो लोग जान बचाते हैं 90% से ज्यादा। मोर देन 90% ऑल रेस्क्यू ऑपरेशंस आर कैरिड आउट बाय दीज पीपल। अगर ये 90% है तो उन्हें पता तो होना चाहिए क्या करना है। मुझे बड़ा दुख होता है कई बार कि हमारे सिविल डिफेंस में कई बार सिविल डिफेंस केवल वार्डन तक की सीमित कर दी जाती है, लेकिन क्या वार्डन ने अपने यहाँ टीमें तैयार की हैं, ग्रुप्स बनाए हैं जो कि इस प्रकार से कम्युनिटी लेवल पर एक रेस्क्यू का ग्रुप हो, यंग लोग हों जिन्हें पता हो कि बेसिक्स क्या करना चाहिए, अपने आप को सेफ रहते हो कैसे काम करना चाहिए, हर एक सिचुएशन में कैसे अपने आप को बचा के काम करना है। ये सब चीजों की इनको अगर ट्रेनिंग मिली हो या वो काम करने की क्षमता रखते हो तो ऑब्वियसली दे विल बी एबल टू डू मच मोर।
what we need to understand is that building of these teams is not a big rocket science. और इसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज आप सबके पास में है. सबसे पुराना डिजास्टर ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई देश में है 68 से लेकर के, तो वो सिविल डिफेंस है, और कोई प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. बाकी सारे के सारे ये नए दशक में आए हैं. ठीक है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज तो आप लोग ज्यादा जानते हैं, और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है तो उसको अप्लाई करिए ग्राउंड पर, और अकॉर्डिंगली हैव सच प्रैक्टिकल पीपल हु कैन स्टिल कीप ऑन वर्किंग एंड हेल्पिंग अदर्स. दोस्तों, in fact, I would now come back to what I wanted to rather share as far as this subject is concerned. देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम डिजास्टर्स की जब बात करते हैं या कोई भी हादसे की बात करते हैं, हालांकि डिजास्टर की परिभाषा अलग लोगों को अलग प्रकार से देखनी जरूरी है. गवर्नमेंट इसे देखती है कि बहुत ज्यादा तबाही हो गई, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, लोग कोपिंग कैपेसिटी नहीं रखते हैं. ऑल दीज थिंग्स इन फैक्ट इज व्हाट इज बीइंग वॉच्ड बाय द गवर्नमेंट टू डिफाइन when to declare a disaster. But a question which comes to you, that if a family of 5 loses the basic or the main breadwinner, will it be disaster for that family or not? क्या एक फैमिली जो 5 लोगों की है, उसका एक मेन ब्रेडविनर या कमाने वाला अगर वो चला जाता है, तो कई बार ऐसी फैमिली जो है APL से BPL में आ जाती हैं. These are certain, in fact, truths which we must all be aware with, and we must know that such type of things do happen. So pre-planning, preparedness for each and every family is a must. So family planning for disasters is what is necessary, and each family need to have their disaster plan, emergency plan rather, उनके पास होना जरूरी है, ताकि किसी प्रकार का कोई भी घटना हो तो वो उससे डील कर सकें. इसी से जुड़ी हुई आगे वाली चीज मैं बता दूं कि जब भी कोई इवेंट होता है, जैसे घर में किसी की मौत हो जाती है, तो उसको भी हम कह लें कि पहले से तैयारी और नॉलेज जो है काफी कुछ चीजें जो है आसान कर देती है. और सबसे बड़ी बात, जो इम्पैक्ट की बात करते हैं, इन एवरी इवेंट द इम्पैक्ट्स मे बी विजिबल, सम आर नॉट विजिबल ऑल्सो. फिजिकल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, all these impacts may be visible. But there is something which is invisible, which we normally call as emotional impact. और जब इमोशनल इम्पैक्ट की बात आती है, तो यहां पर सबसे बड़ी बात आती है पोस्ट डिजास्टर, कि डिजास्टर के बाद में. देखिए, कहीं पर भी अगर कोई घटना होती है तो आमतौर पे क्या होता है कि किसी घर में मृत्यु हो जाए तो दोस्त रिश्तेदार आते हैं अफसोस करने के लिए और आकर के सांत्वना देते हैं. आसपास के लोग जो आते हैं वो सांत्वना देते हैं. लेकिन धीरे 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 जब वो ये लोग चले जाते हैं, अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो जो व्यक्ति होता है जिसने खोया होता है किसी को, वो अकेला पड़ जाता है. एंड दैट इज व्हेन दैट पर्टिकुलर इम्पैक्ट स्टार्ट्स प्लेइंग लॉट ऑफ डैमेजेस साइकोलॉजिकली टू दिस पर्सन. एंड इसलिए साइको सोशल सपोर्ट जो है एक बहुत बड़ा अंग है जिसमें सिविल डिफेंस बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर सकता है. और इसमें केवल हम उन लोगों को ना देखें जिन्होंने अपने लोगों को खोया, नजदीकी लोगों को खोया है, बट जिन्होंने भारी मात्रा में अपने प्रॉपर्टी खोई है, बल्कि इसके अलावा भी हमारे अपने रिस्पॉन्डर भी. अब मैं एक प्रैक्टिकल बात करता हूँ कि मैं एक्सीडेंटली कहीं दिल्ली में था जब मेरे फादर का बाईपास सर्जरी हो रही थी, तो उसी दौरान वहां पर दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए. एक मार्केट एरिया में बहुत बॉम्ब ब्लास्ट के बाद तबाही मची. तो एक वॉलंटियर हमारा जो यंग था, तकरीबन 21 साल का लड़का था, और वो वहां पर सभी की मदद में लगा था. तो उसको एक जगह पर एक व्यक्ति की बॉडी दिखी. अब उसको तो कोई बेसिक इसमें नॉलेज ज्यादा नहीं थी, क्योंकि अभी ज्वाइन ही किया था उसने 1 महीना पहले, और वो उसको निकालने के चक्कर में उसने उसकी टांग खींची, और टांग खींचने के साथ ही दैट बॉडी स्प्लिट ओपन, एंड सब्सिक्वेंटली द होल इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी बिकेम विजिबल. उस लड़के के सामने जो कह लीजिए जो नजारा बना, वो इतना भयानक था कि वो लड़का वहां से छोड़ करके उसे भागा. एंड फॉर 5 days he locked himself in his room and never came out. उसके मनोवैज्ञानिक तौर पर उसके दिमाग पर इसका इतना बुरा असर पड़ा कि वो, मैं बाद में ही मिला उससे, लेकिन आज भी उसको वो मंजर याद करके बहुत दहशत होती है, बहुत डर होता है. तो दोस्तों, हमारे रिस्पॉन्डर्स जो हैं काम करते समय उनको भी इस प्रकार की दिक्कतें आएंगी, अलग अलग प्रकार की उनके सामने कई परेशानियां आएंगी, कई तरह के
कह लीजिए कि दे विल बी लुकिंग एट डिसमेंबर्ड बॉडीज, लॉट ऑफ पीपल विद वेरी ग्रेव इंजरीज। ये डर के भागने की बात नहीं है, और ये एक सच्चाई है दोस्तों। जान लें कि भाई पब्लिक आकर के किसी एक्सीडेंट विक्टिम की अगर मदद नहीं करती है तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि कई लोग ऐसे मंजर को फेस ही नहीं कर पाते हैं। किसी का पैर कटा हुआ है, किसी को बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, एंड पीपल नॉर्मली रन अवे फ्रॉम दैट कि भैया ये तो भैया बतेगा नहीं, मैं क्या करूंगा इसको। तो इस प्रकार से जो है ये शौक जो है, ये शौक तभी हटाया जा सकता है अगर व्यक्ति को पहले से ही उसकी तैयारी की जाए कि साइकोलॉजिकली दीज आर थिंग्स व्हिच यू आर गोइंग टू सी, और उसके बेसिस पर अगर हम उन्हें प्रशिक्षण करके तैयार रखें तो वो इन चीजों को ओवरकम कर पाएंगे, रेसिलिएंट बन पाएंगे, और अकॉर्डिंग वो साथ में वो रेसिलियंस के साथ दूसरों की मदद भी कर पाएंगे। एक साइको सोशल ट्रीटमेंट के तौर पर तो अलग बात है जो कि साइकोलॉजिस्ट करते हैं, लेकिन जहां तक एक कॉमन सिविल डिफेंस रिस्पॉन्डर की जो जरूरत है वो ये है कि एक इमोशनल इम्पैक्ट को समझें, उसे आइडेंटिफाई करे कि कौन व्यक्ति हैं जिनको की पूरी तरह से दिमागी तौर पर मदद की जरूरत है, और उसको आइडेंटिफाई करके जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनके द्वारा उन तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा वो स्पेशलिस्ट जो हैं जो साइको सोशल सपोर्ट देते हैं, इस प्रकार की प्रशिक्षण हमारे यहाँ एनसीडीसी में चलती रही है और कई लोगों ने उसका प्रशिक्षण भी लिया है। और ऐसे मेथड्स हैं, बड़े सिंपल मेथड हैं, अगर इनको हम समावेश करके वहां पर अप्लाई करें तो दीज मेथड्स कैन ब्रिंग इन लॉट ऑफ मेंटल strength to those people who may be affected by any particular psychological impact during an event or during a disaster also. अब ये साइकोसोशल सपोर्ट देना कोरोना में भी इनफैक्ट इसकी बहुत जरूरत है, बिकॉज कोरोना ने अपने आप में भी काफी डर पैदा कर दिया है। फिर लोग डर जाते हैं, कोई लेडी अगर वहां से डॉक्टर हैं वापस घर आ रही हैं तो उनको बोल दिया जाता है कि आप मत आइए, बिल्डिंग से बाहर चले जाइए। These are all basically, in fact, psychological impact which have been created because of information, which people are taking it in a different fashion. तो educate करना, समझाना और उस चीज को रियल पर्सपेक्टिव में रखना ये बहुत जरूरी है। और साइको सोशल सपोर्ट एक अभिन्न अंग है, और इसलिए जितने हमारे चीफ वार्डन्स हैं जो कि हमारे स्टेट्स के हैं, अपने यहाँ पर एक टीम जरूर बना के रखिए साइको सोशल सपोर्ट की, जो ऐसे लोगों को मदद कर सके जो कि किसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रताड़ित हों। दोस्तों, उत्तराखंड डिजास्टर जब हुआ था और उत्तराखंड डिजास्टर के टाइम पर कई लोग जो यहाँ से टूरिस्ट बन के गए थे, मेनी वर मेंटली डिस्टर्ब्ड, कई तो बिछड़ गए थे और अपने परिवारजनों से बहुत दिनों के बाद मिले। रादर एक लेडी तो 2 साल के बाद में कोई व्यक्ति ने किसी का देखा और उनको आइडेंटिफाई किया और उनके घर वालों को पता किया, फोटो भेजी, तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें पॉसिबल हुई हैं और लोगों को मदद पहुंची है। आप सिविल डिफेंस से एक चीज समझना सिविल डिफेंस वालों को बहुत जरूरी है, और सिविल डिफेंस इसकी पूरी तरह से कैपेसिटी रखती है कि हम अगर विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे इम्पैक्ट्स हैं, इफ वी कैन अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई ऑल द इम्पैक्ट्स which can be created, we can have a team assigned for it, and team which comes from locally, from all those people you have within yourself. सिविल डिफेंस का मकसद ही है लोगों को जोड़ना, और लोगों को जोड़ने का मतलब है जो भी स्पेशलिस्ट फील्ड से आते हैं, जो हमारे काम से जुड़े हैं, उन लोगों को जोड़िए साथ में। साइकोलॉजिस्ट को लाइए, लॉयर्स को लाइए, हमारे सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, लीगली, क्योंकि ये लॉ स्कूल से वेबिनार हो रहा है, तो मैं ये बता दूं कि लीगली सिविल डिफेंस के पास में बहुत बड़ा एक कह लीजिए कैपेसिटी है कि वो लोगों की मदद कर सकता है, और उसके अगेंस्ट कोई भी कह लीजिए कोर्ट ऑफ लॉ में एक्शन नहीं लिया जा सकता। और ये कोर्ट ऑफ लॉ में एक्शन नहीं लेना का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करें, मतलब ये है कि अगर आप गुड फेथ में काम कर रहे हो, मदद करने के मंशा से आप मदद कर रहे थे, यू वर ट्राइंग टू सेव समबडीज लाइफ, you were trying to help somebody, obviously you will be in a position to establish that your intentions were good. And if your intentions are good, subsequently everybody will understand that you cannot be penalized for that good action which you have taken. And that is where
now the government of India wants that whole of India and every district of rather India must have civil defense, and हर डिस्ट्रिक्ट में सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ वॉलंटियर्स को रेस करना चाहिए। 1 करोड़ की तादाद में लोग जुड़ने चाहिए, और ये लोग अगर जुड़ जाएंगे तो ये केवल सीमित एक व्यक्ति की नहीं रहेगा, ये पूरे देश भर में एक मिशन की तौर पर काम होगा। एंड ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ सच नेचर विल हैव अ कैपेसिटी इन हिज ओन वे टू डील विद इट। नाउ फ्रेंड्स, मैं अपनी प्रेजेंटेशन में एक ही चीज आखिर में स्ट्रेस करना चाहूंगा कि दोस्त, मैनेजमेंट तभी संभव है जब मैनेजमेंट करने वाले लोग होंगे। इस समय क्या है, ग्राउंड पर लोग ही नहीं है, तो मैनेजमेंट कैसे होगा? अब हमारे को मैनेजमेंट में हमारा मास्टर प्लान दिया गया था सिविल डिफेंस का, उस मास्टर प्लान में हर एक टीम्स का, हर व्यक्ति का रोल दिया गया था, बताया गया कितने क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो हमें वो रोज, जब तक रिसोर्स क्रिएट नहीं करेंगे हम, तो मैनेजमेंट संभव नहीं होगा। और ये चीज समझ के चलिए कि किसी भी इवेंट में जहां पर डिजास्टर्स होगा, डिजास्टर्स में देयर विल बी शार्प रिडक्शन इन मैन पावर विद इमरजेंसी सर्विसेज ऑल्सो। याद रखिए, इमरजेंसी सर्विसेज में भी इंसान काम करते हैं, और अगर यही इंसान का घर अपना गिर गया होगा और उसके वाइफ और बच्चे दबे होंगे, वो ड्यूटी पर नहीं आएगा, और अगर वो ड्यूटी पर नहीं आएगा तो करेगा कौन? और इसके लिए हमारे पास जवाब होना चाहिए कि साहब, मेरे पास सिविल डिफेंस में 10 डॉक्टर हैं, वो काम करेंगे। मेरे पास साहब ऐसे लोग हैं जो कि रेस्क्यू में ट्रेंड हैं, मैं 50 लोग रखता हूं, वो काम करेंगे। ये बैकअप की तरह से एक हमारे पास रिसोर्स होना बहुत जरूरी है, जिसको सिविल डिफेंस ने क्रिएट करना है, जो इमरजेंसी सर्विसेज के साथ मिल करके उनकी नफरी को बढ़ा सकता है। और नफरी को बढ़ाने का मतलब है नंबर्स मस्ट इंक्रीज, बिकॉज ऑन ग्राउंड दिस इज व्हाट इज नीडेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज प्राइमरली टिल योर रिस्पॉन्स एंड रिकवरी प्राइमरली इज बीइंग अफेक्टेड। धीरे धीरे ये स्केल डाउन होता चला जाता है, बिकॉज द रिकवरी कम्स पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़े लोग बड़ा काम करने की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन शुरुआत में बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ सकती है। And that is where in disaster management, the resource mobilization at each and every level is a must. आज हमारे पास टारगेट भी 13 लाख का जो दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले, वो भी अचीव नहीं हो पाया। We have only but 7.5 lakh volunteers all over the country. रादर जो छोड़ के चले गए हैं सिविल डिफेंस को, उन्हें भी वापस लाइए और रादर उनको मेंटर के तौर पे इस्तेमाल करिए। लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंस है, क्योंकि उनके पास में पहले से प्रशिक्षण है, दे कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ योर लिस्ट। दे मे नॉट बी हैविंग any designation at the moment, but they can still be a member of civil defense, and accordingly उन्हें भी साथ में जोड़ करके रखने से हमारे नंबर्स काफी बढ़ेंगे, और ग्राउंड पर जब जरूरत पड़ेगी तो दे कैन ऑल बी ब्रॉट टू टॉक अबाउट सच थिंग्स। दोस्तों, डिजास्टर साइको सोशल सपोर्ट एक बहुत हिडन इम्पैक्ट है। उस हिडन इम्पैक्ट में सबसे बड़ी बात आप लोग एक समझ लीजिए, आज स्कूल्स में भी, रादर स्टूडेंट्स में भी, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में डिप्रेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और डिप्रेशन सबसे पहले डील करने में आपको उसे पहचानना जरूरी है। डू वी हैव द कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई पीपल इन डिप्रेशन? और डिप्रेशन के लिए क्या चिन्ह होते हैं, किस तरह से होता है, ये सब चीजें अगर हम समझ पाए और आइडेंटिफाई कर पाए तो वी कैन एड्रेस इट। एड्रेस करने के लिए हमारे पास तरीके हैं, हमारे पास जरिया है, हमारे पास लोग हैं जो उनके साथ बात करके ये सब चीजें कर पाते हैं। रादर ऑल दोज पीपल हु हैव बीन वर्किंग इन कोरोना एंड सिविल डिफेंस के लोग भी जहां काम कर रहे हैं, एक ड्रिल बना लीजिए कि कम से कम हफ्ते में सभी मिल करके इन लोगों से शेयर करें, उनकी कहानियां शेयर करें, उनकी बातें शेयर करें, उनके साथ बैठ करके उनके साथ बात करें, ताकि उनको भी रिलीफ मिले कि हाँ साहब, हमारी किसी ने बात सुनी है। याद रखिए कि हम लोग हमेशा घरों में कहते हैं कि भाई किसी का ग्रीफ शेयर करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। किसी का दुख शेयर करना, बात करना, वो कहते हैं बात करवाइए, उसको बोलने का मौका दीजिए, तो उसके साथ में काफी कुछ चीजें राहत के तौर पर आप पहुंचा पाएंगे।
as a person who understands this impact, you can do a much, much bigger role, and you can rather go and perform much bigger help to the individual who may have suffered from such an impact. दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करने में. मुझे मालूम है कि समय काफी हो चुका है. मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जितना कुछ मैंने अभी आपको बताया है, मेरे ख्याल में आप लोग इसका अनुसरण करेंगे. If you can follow this, if you can implement this on ground, civil defense will have a much bigger figure and image as far as government and our country is concerned. एक रोल मॉडल सिविल डिफेंस को बनाएं पूरे विश्व के लिए कि सिविल डिफेंस इंडिया एक बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता रखता है. और आपको एक और गुड न्यूज दे दूं कि भारत सरकार ने कोरोना के लिए अगला स्टेप वैक्सीनेशन के लिए सर्वे करने के लिए सिविल डिफेंस और होमगार्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. तो आप दोनों से जरूरी है कि आप लोग आइडेंटिफाई करें. कोरोना में सबसे पहले तो प्रायोरिटी दी जाएगी कुछ लोगों को कि किनको वैक्सीनेट होना है. एंड वैक्सीनेशन में पीपल हु प्राइमरीली आर ओल्ड इन एज एंड हैव कोमॉर्बिडिटीज, उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी. तो ये काम हमारे सिविल डिफेंस के लोगों ने शुरू करने हैं. इसके लिए निर्देश जारी हो चुके हैं और आपके स्टेट में भी पहुंचेंगे. पहुंचने के बाद इस काम को पूरी एफिशिएंसी के साथ, इफ यू कैन परफॉर्म एंड इफ यू कैन वर्क, you will have a much bigger contribution in raising the image of the civil defense in the entire country. Thank you, friends, and thank you, Dr. Joshi, and we'll keep on interacting. Any opportunity again given, I'll certainly like to interact. Thank you very much. Bye. Thank you, Saini sir. Thank you very much for your very significant speech with practical suggestions. Thank you, sir. Now, friends, we are having only 5 minutes question answer session. So we are having this limited time period. So if you have any question, you can ask. That will be answered by our keynote speakers. And you should ask only relevant questions. We have only 5 minutes time. Mr. Manoj Gehlot, could you please stop presenting? May I request you, Mr. Manoj Gehlot? Kindly stop presenting your screen. Yes, friends, you can ask any questions, any queries if you have. We have limited 5 minutes period. Okay, no queries. Okay. Now, friends, last but not least, I would now like to invite Professor Subhash Sharma, Director, Pacific School of Law, to propose a vote of thanks to our distinguished keynote speakers. Professor Subhash Sharma, over to you, sir. Thank you, Dr. Manoj Joshi, for your, kind and nicely coordinated the session, along with your insight, along with the speakers. Vote of thanks is not an easy job to be casted, but still, if given this opportunity, I would love to cast this vote of thanks. First and foremost, I would like to thank from the bottom of my heart all the distinguished guests, starting with Amit Ji Sharma, Dr. Rajesh Kumar, Dilpal Singh Ji, and Gurudev Singh Ji. To be very frank, when I was, the Senator was about to wind up his session, he said, the people of defense would love to connect people. Senator, I would like to explain with you that even this webinar of Pacific School of Law basically came up with the same vision and mission to connect more and more people. We are really thankful that for your lively, presented, insightful, meaningful and senseful deliberations, which I understand that it might have helped the people, the participants, those who have joined today.
Moving further, I would like to extend my warm thanks to Join Amar Singh ji, whose continuous efforts made this particular event a grand success, because he was the one who connected you all people with our own institute. So I must congratulate and thank Amar Singh ji for his kind support right from the very beginning, right from the identifying of the topic till inviting all the guests. Moving further, I would like to extend my heartfelt thanks to Professor K.K. Dave, Honorable Vice Chancellor, Pacific University. Though he is not here because he is having some important meeting somewhere, but he is the one motivating along with my entire team of PSS, those who have been continuously weaving dreams to make something happen. And today is the day when we are 10th. And I understand that's what over to Dr. Manoj. Thank you, sir. Thank you for your very significant message. Now, our session is now over, sir. I announce that our session is over. And thank you once again. Thank you very much. Now, then I request you may now leave. Session is over. Thank you, Dr. Manoj. Thank you, Dr. Manoj Jyoti. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, dear speakers, for your wise note. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Everybody, my old friends of the civil defense, for joining today. It has given a very much pleasure to me. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, for this webinar. Thanks to all speakers, sir.
Thank you, sir.